नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स। आज के सरेंडर टू लाइट मेडिटेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी। I forgot to say hello to some new participants in our class. ये मेरी कम्युनिटी में ही रहते हैं, तो मैंने अपनी कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ये फ्लायर yesterday डाला था पहली बार. So please raise your hands who are new ones who have joined for the first time or the second time today, so that I can know that some new people have joined. तो थोड़ा कुछ बता सकती हूँ मैं इस मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को, एंड आई विल बी मेकिंग सम इंट्रोडक्शंस टुडे फॉर द न्यू पीपल कि ये क्या मेडिटेशन हम कर रहे हैं और व्हाट इज दिस सरेंडर टू लाइट मेडिटेशन एंड व्हाट इज द आनापानासति मेडिटेशन दैट वी डू. So please raise your hands if you are a new person. हम पितामह पत्रीजी की, सुभाष पत्रीजी की डेली मैसेजेस वॉल्यूम 1 कर रहे हैं. दिस इज द बुक दैट वी आर डूइंग करेंटली इन दिस सेशन, और ये बुक हम रोज डिस्कस करेंगे. yesterday हमने ये डिस्कस किया था द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक. पहला पार्ट जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था वो था हेल्पिंग अदर्स इज हेल्पिंग योरसेल्फ, benefiting others is benefiting yourself, teaching others is teaching yourself. So whenever you're helping anyone, जब भी आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की निष्काम सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा का काम अगर आप कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप को ही बेनिफिट कर रहे हैं. There is no other, there is only one. That is single truth in this universe. So help others, benefit others, teach others, and therefore you help yourself. ये पितामह का पहला मैसेज था. When you help yourself, you benefit yourself, and you end up teaching yourself. Whatever you want to, आप जो कुछ भी इस सृष्टि से, इस क्रिएशन से आप चाहते हैं, मुझे सुख चाहिए, I want happiness from this creation. So what do I give to others? We have to look at that. What am I sharing with others? मैं क्या शेयर कर रही हूँ सब लोगों से? Am I sharing my happiness with everyone? Am I sharing my abundance with everyone? Whatever you want from this world, learn to first give it away, and then without asking, it will be yours. So you have to. That is the golden rule of human life. Many masters have lived on and taught only this one rule. Whatever you expect from your life, give it freely to others around you. And always, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, charity begins at home. जब महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था, तो वो साउथ अफ्रीका में थे. तो उन्होंने वहां से अपार्थाइड के अगेंस्ट अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था. बट later on he understood that first I have to get my motherland free of the same problem. So charity always begins at home. आपको सेवा करनी है सबकी. आपको आपके अराउंड जो कोई भी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके नेबर्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपकी कंट्री है. It is ever extending circle of expansion and help. Again, I want to welcome, अगर कोई नए लोग ज्वाइन हुए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स. मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी आपको के what is surrender to light meditation and what is anapanasati meditation that we do. ये कौन सा मेडिटेशन है जो हम करते हैं, ये करना बहुत जरूरी है. मेडिटेशन इज द कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ. एवरी साइंटिस्ट सेज मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन के बिना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमें. और meditation, different kinds of meditation, help us to bring our mind, our soul in balance, to keep our mind and soul in balance. So always जो हम चाहते हैं इस सृष्टि से, नेचर से, हमारे अस्तित्व से, वो हमें देना है पहले बाहर. We have to throw out that energy from ourselves
to get that energy back to us. इसके बाद हमने ये helping others, benefiting others and teaching others. So we help. इसके बाद second था fine tuning. सर ने इसके बारे में डिस्कस किया है. Life is a continuous fine tuning. Fine tuning of our thoughts, fine tuning of our words and fine tuning of our actions. जो लोग कल इस प्रोग्राम में आए थे, आई एम रिपीटिंग सर्टेन थिंग्स क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था एंड सम पीपल वर आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग एंड सम पीपल वर सेइंग वी कुडंट, हम सुन नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगी, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगी. सो लाइफ इज ए कांस्टेंट फाइन ट्यूनिंग. फाइन ट्यूनिंग टुवर्ड्स व्हाट? हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस एक ही लाइन में आए. मेडिटेशन का होल पर्पस यही है. अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसका पर्पस भी यही है. ज्ञान और ध्यान साथ में चलता है. विदाउट ज्ञान, इफ यू जस्ट डू ध्यान, इफ यू डू अ लॉट ऑफ ध्यान, इट विल एनीवे हेल्प यू, बट ज्ञान होना बहुत जरूरी है ध्यान को की परिपक्वता के लिए. फॉर मैच्योरिटी टू कम इन मेडिटेशन एंड वी नीड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज. अदरवाइज क्या होता है कि जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में तो हमारा ध्यान छूट जाता है. ये एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स के साथ भी होता है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो ज्ञान एंड ध्यान बोथ आर टुगेदर इन आवर लाइफ. सो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइन ट्यून आवर थॉट्स, fine tune our words, and this is a never ending process. There is no end to fine tuning. It is an eternal process. That is why हम unlimited number of lifetimes लेते हैं. क्यों लेता है एक सोल बहुत सारे लाइफटाइम? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद. हिंदुओं के लिए तो कोई नई बात नहीं है. हिंदूज ऑलरेडी नो दैट, बुद्धिस्ट नो दैट, मेनी अदर रिलीजन्स नो अबाउट रीइंकार्नेशन. हम बार बार सोल हमारा बर्थ लेता है. क्यों लेता है? हमारा सोल बर्थ इसलिए लेता है टू कीप ऑन फाइन ट्यूनिंग, टू एक्सेप्ट मोर चैलेंजेस एज ए ह्यूमन बीइंग एंड टू लर्न फ्रॉम दोस चैलेंजेस, टू बिकम मोर एंड मोर मैच्योर, टू गेट बेटर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ how to be more patient, more tolerant, how to be more balanced in spite of everything going against us. हम कैसे बैलेंस में रहेंगे? हम कैसे सम में रहेंगे? अगर हर चीज हमारे खिलाफ जा रही है, हर तरफ हमारी प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है, which is also a part of human life and experience. So हम कैसे उस बैलेंस में रहें, उसलिए हमारे लिए ज्ञान जरूरी है और मेडिटेशन जरूरी है. और इसीलिए अ सोल जो एटर्नल है वो कई जन्म लेता है. एक जन्म में का एक्सपीरियंस काफी नहीं है. बार बार जन्म लेके नए नए एक्सपीरियंसेस गैदर करता है एंड सो इट ग्रोज एंड ग्रोज. और उसका सोल का एक्सपेंशन होता है. हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने आप को एक्सपैंड करें, लिमिटलेस एक्सपेंशन की तरफ हम बढ़ें. We should not remain only as an ego. We have to expand into our soul. So it is an eternal process. Fine tuning is forever. You are forever and fine tuning is forever. हम ऐसा कभी नहीं होता कि अब ये सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, अब द एंड हो गया, अब मेरा कंप्लीट सब, मुझे जितना ज्ञान लेना था वो सब हो गया, अब मैं अवतार का भी महाअवतार हो गया एंड देन आई एम डन. ऐसे कभी नहीं होता माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी भी नहीं होता. ग्रेट मास्टर्स लाइक जिद्दू कृष्णमूर्ति एंड मेनी अदर्स हैव सेड कि ये एटर्नल प्रोसेस है. हाउ कैन यू बिकम, you can never expand into completeness. It is forever. It is an eternal process, and this expansion is limitless and ever changing. That are the 2 points. ये 2 बातें हैं. The expansion of a human soul is limitless and it has got two
qualities. It is limitless and it is ever changing. So we can never reach what we call, oh, now I'm done, I know everything. No, it is never like that. So even जो अवतार हैं वो भी बार बार जन्म लेते हैं, जो बड़े बड़े सेंट्स हैं वो भी चूज करते हैं अगर उनकी मर्जी है तो, कि whenever they want they can take birth. So that is an eternal process. So इसलिए पितामह ने कहा है कि this is an eternal process. मैं थोड़ा सा, मैंने कल इसके बारे में ऑटोबायोग्राफी या फिर योगी के बारे में डिस्कस किया था कल, अबाउट द स्लीपलेस सेंट. इनका नाम था राम गोपाल मुजुमदार, जिसके बारे में इन्होंने लिखा था योगानंदा परमहंसा. ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का के अंदर है. इसमें इन्होंने लिखा है कि हाउ ही मेट दिस ग्रेट सेंट. और वो हिमालय में रहते थे, राम गोपाल मुजुमदार. वो बहुत बड़े संत थे, कभी सोते नहीं थे वो. तो ये तारकेश्वर एक जगह है हिमालयज में. तो ही वॉज देयर एंड योगानंदा हैड गॉन टू मीट हिम. तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी आज के ये बुक में से. सो देयर वाज ए क्वेश्चन एंड आंसर that was going on between Yogananda and Ram Gopal Muzumdar, who is the sleepless saint. And I'm reading now from the book. And Yogananda is saying, I was planning to leave Run Bajpur, but your purpose was good, so I awaited you. He shook his finger in my astounded face. Aren't you clever to think that, unannounced, you could pounce on me? That Professor Bihari had no right to give you my address. राम गोपाल मुजुमदार जी का एड्रेस देने का उनको कोई अधिकार नहीं था, ऐसा कह रहे थे राम गोपाल जी. To whom? To Yogananda. Considering that the introduction of myself would be mere verbosity in the presence of this master, I stood speechless, somewhat hurt at my reception. His next remark was abruptly put. Tell me, where do you think God is? And Yogananda answered, why? He is within me and everywhere. Oh, all pervading, the saint chuckled. That's why, young sir, did you fail to bow before the infinite in the stone symbol at the Tarkeshwar temple yesterday? Your pride caused you the punishment of being misdirected by the passers-by, who was not bothered by fine distinctions of left and right. Today too, you have had a fairly uncomfortable time of it. So मैंने कल आपको बताया था कि वो तारकेश्वर के एरिया के अराउंड रहते थे ये, the sleepless saint called Ram Gopal Mazumdar. And उन्होंने बोला था कि उन्होंने कहा था कि जब आप मुझे ढूंढने आए थे और आप कई दिनों तक मुझे ढूंढ रहे थे, but you could not find me. Why? Because you had so much pride कि तुमने जो मेन टेम्पल है उसमें जाके तुमने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं दिखाई. You did not pay obeisance to that infinite in the stone symbol because you're full of pride. You need humility to know God and to meet great sages and saints. I agreed wholeheartedly, says Yogananda. The devotee inclines to think his path to God is the only way. Yoga, through which divinity is found within, is doubtless the highest road. But discovering the Lord within, we soon perceive him without. Holy shrines at Tarkeshwar and elsewhere are rightly venerated as nuclear centers of spiritual power. So all the temples, all this
all the places of worship in India and in many other places all over the world, there are some energy centers. They are great for people who are meditators. और अपने प्राइड की वजह से हमें उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है. So then he went and spoke back to Yogananda. He said, young yogi, I see you are running away from your master. He has everything you need. You must return to him. Mountains cannot be your guru. Ram Gopal was repeating the same thought which my guru Shri Yukteswar had expressed in our last meeting. Masters are under no cosmic compulsion to limit their residence. The Himalayas in India and Tibet have no monopoly on saints. When one does not trouble to find within, will not be discovered by transporting the body hither and you. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby. So, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया. So इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं आज मेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट, एंड दैट इज, योगानंद ने उनसे पूछा, माय गुडनेस, यू हैव मेडिटेटेड फॉर सो लॉन्ग एंड येट आर अनश्योर ऑफ लॉर्ड्स फेवर, देन व्हाट अबाउट us poor mortals? That time Yogananda was a young boy who had run away from his guru's ashram. So उन्होंने आंसर किया राम गोपाल जी ने, well, don't you see, my dear boy, that God is eternity itself? To assume that one can fully know him by 45 years of meditation is rather a preposterous expectation. Sorry, a preposterous expectation. Babaji assures us, however, that even a little meditation saves one from the dire fear of death and after death states. Do not fix your spiritual ideal on a small mountain, but hitch it to the star of unqualified divine attainment. If you work hard, you will get there. So this is very beautiful experience जो मैंने आप लोगों को आज सुनाया योगानंद जी का, and this is very very informative, क्योंकि कल मैंने उनका नाम नहीं मुझे याद था, तो मैंने बुक खोली और मैंने उसको चेक किया to find out about the name of this great saint called Ram Gopal Mazumdar. He never used to sleep. उन्होंने 45 years बिना सोए हुए 24 घंटे मेडिटेशन करते थे वो, और उन्होंने यही पॉइंट कंफर्म किया जो सर ने बुक में बताया है कि दिस इज एन एटर्नल पाथ, एक्सपेंशन इज लिमिटलेस. नाउ वी विल गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक, दिस ग्रेट बुक, दैट oneness in theory, togetherness in practice. We are all one. हम सब एक से उपजे हैं और सब एक सिंगुलैरिटी है. एकम सत, one, there is one truth. Togetherness in practice, साथ में बैठ के प्रैक्टिस करना है. जब हम साथ में सत्संग करते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं, that has to be done together. उससे एनर्जी बढ़ती है, मेडिटेशन प्रैक्टिस की एनर्जी बढ़ती है, जो मेडिटेशन कर रहा है उसकी स्पिरिचुअल अटेनमेंट फास्टर होता है. That is very essential for us. Oneness in the mind, togetherness in the physical. So that is the aim. Oneness in mind, when all 10 minds, 15 minds are sitting together and doing meditation, doing satsang together, it makes the whole energy very powerful. Individually,
We are all alone always. But in togetherness, we are never alone. Our individuality is never lost. But in togetherness, we grow tremendously. Togetherness demands many adjustments. Life on earth is great lesson. So much he's telling here. What Pitama is saying is that जब हम साथ में, जब हमारे पास ये experience आता है that I am someone else and this the other person is the other, and then we deal with them because of this creation, this manifestation that has happened. So there are many. From one became the many. So when the many interact among themselves, there is a lot of spiritual growth and attainment. There is a reason for this creation. The reason is for the creation is ever expansion. How does a soul expand? By interacting with other minds, with other souls. He has to constantly interact. Some souls are positive, वो help करते हैं आपकी growth को. कुछ souls are negative. They give you some other experiences which also help you to grow. The best growth that you will have in human life is going to be when you have challenges, when you have negative experiences. जब आपके negative experiences होते हैं तो सबसे ज्यादा आपका growth होगा. Positive experiences में कभी ज्यादा growth नहीं होता. However, life is up and down all the time. So togetherness, we grow tremendously, Pitama says. Togetherness demands many adjustments. It's not easy. हम ऐसे जितने लोग ग्रुप्स में फंक्शन कर चुके हैं, स्कूल्स में जब हम पढ़ने जाते थे, जब हम फैमिली बनाते हैं, तो वी कम टू नो दिस द फैक्ट के टू गेट अलोंग विद अदर पीपल, टू नो हाउ टू वर्क इन ग्रुप्स, टू नो हाउ टू वर्क इन ए फैमिली सिचुएशन, to know how to work with in your office, in your college, in your school, with other people. It demands a lot of adjustment. And what happens is adjustment में हमारा growth होता है. Life on earth is great lesson in togetherness. The whole world is moving towards togetherness. Again, remember the togetherness that Pitama is saying is singularity. In the end, everything is one. And we have to learn, keep on learning this lesson as a human being. We are all oneness in theory, but achieving togetherness of all individualities is the goal. In theory, we are all one because we all came from one. जो अद्वैत का principle है oneness. There is only one. So the manifestation happened and now there are many. There are multiplicity of बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा creation है. Names and forms, multiplicity of names and forms. So he says we are all oneness in theory. Yes, we are all one. That's a fact. And in theory also, it's the truth. But achieving togetherness of all individualities is the goal. So these individuals, the so-called Jivatmas, the individuals have to all know how to work together peacefully. Even when the atmosphere or the situation around that particular individual is not conducive. वो हमारा सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो उसके बाद भी we have to learn how to work with the other people. This is a constant lesson that life keeps on teaching us. Multiple lifetimes, multiple challenges, multiple lessons. In the end, we have to learn togetherness of all individualities is the goal, Pitama says. So this is why we are taking this birth. At some point, हम इतने expansion में आ जाते हैं कि then it is our choice
we don't take birth anymore for our own selves. We take birth for दूसरों को टीच करने के लिए हम बर्थ लेते हैं, हम सिखाने के लिए बर्थ लेते हैं. As saint, sage, those are the saints and sages जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बर्थ लेते हैं, ज्ञान देने के लिए बर्थ लेते हैं, मोटिवेट करने के लिए बर्थ लेते हैं. So that becomes the next goal. So today's topic ends on this page. Anyone who has something to add, they can raise their hands. और आप में से जो नए लोग हैं उनको मैं सब वेलकम करती हूँ. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. हम लाइट का सरेंडर टू लाइट मेडिटेशन करते हैं, और ये लाइट मीन्स द अल्टीमेट ट्रूथ, द परमात्मा, द परम चैतन्य, द पर ब्रह्म. एंड जब हम कहते हैं सरेंडर टू लाइट, दैट मीन्स सरेंडर टू द अल्टीमेट truth, the absolute truth. That is what we call the divine light. इसमें हम लाइट मेडिटेशन करते हैं और साथ में हम करते हैं आनापानसति ध्यान. लाइट मेडिटेशन इज फॉर क्लेंसिंग पर्पसेस एंड आनापानसति ध्यान हमारा रेगुलर ध्यान की विधि है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं अपना नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ. हम अपनी ब्रेथ के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते. वी जस्ट वॉच आवर breath, we just observe our breath, the flowing of breath, and do not engage with our thoughts while we are doing that. So this is the kind of meditation that we do. आनापानासति ध्यान करने के समय हम अपने हाथों को लॉक रखते हैं इस तरह से, और अपने पैरों को हम क्रॉस रखते हैं. दोनों पैरों को क्रॉस रखे हाथों को लॉक रखने से हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती है और वो ऊर्जा बढ़ती है इस मेडिटेशन में. सो दोज आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट. किसी को कुछ ऐड करना है तो यू कैन, या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, सो आज का हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं. एंड दिस विल बी अगेन वेरी पावरफुल म्यूजिक. और हम आनापानासति ध्यान करेंगे, हम लाइट का भी यूज करेंगे इस मेडिटेशन में. द एम ऑफ मेडिटेशन इज टू क्वाइटन आवर माइंड, बट वी डोंट अप्रोच इट दिस वे. हम ऑब्जर्व करेंगे द नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ. तो माय डियर फ्रेंड्स, टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स. एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें. आधा घंटे हम ध्यान करेंगे. अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो वो चश्मा निकाल दें. ध्यान के समय चश्मा न पहने. आई विल शेयर द म्यूजिक विद यू. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Please go ahead. Can you repeat the asana sitting posture? Yeah. So we sit in a relaxed position. We lock our hands like this. We keep it on our lap this way, and we cross our legs. That way, जब हम इस तरह से बैठते हैं, when we sit like that, we are conserving our energy. We are not letting the energy flow out of our body, and we are observing the natural flow of breath. So that is the technique of this meditation that I'm going to do today. So I'm going to share the music now. अपनी आंखें बंद कर लें. Please close your eyes.
My dear friends, we are going to observe the natural flow of our breath. हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस. We are not going to open our eyes during the meditation. If the thoughts arise, let them arise or let them come and go. Keep your attention on your breath. ये सांसें हमारे साथ जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक हमारे साथ रहती हैं. हम अपनी सांसों को न तेज करेंगे और न स्लो करेंगे. हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे द नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ. धीरे धीरे हमारा मन शांत होता जा रहा है.
our mind is getting quieter and quieter. We will keep our focus on the flow of breath, the incoming breath and the outgoing breath. Let the thoughts come and go. हमारी सांसों के साथ हम एक हो गए हैं. We are one with our breath. I am that I am. Tatvam asti. अपनी परमात्मा के साथ हम एक हो गए हैं. We are one with the eternal soul. The incoming breath and the outgoing breath.
deeper and deeper. हम डूबते ही जा रहे हैं इस चिदानंद स्वरूप शांति में, आनंद में। I surrender. I surrender. I surrender completely to the will of God, to the divine will.
surrender. I surrender. I surrender completely. I surrender to the source. I surrender to the divine guidance. I surrender to the love. I surrender to the peace. And I surrender to my breath. हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस. I will keep my attention on my incoming and outgoing breath.
परम शांति, परम आनंद, we are one with our breath. एक हो गए हैं हम अपने सोर्स के साथ. The source is the divine light. The light is now completely engulfs us. इस दिव्य प्रकाश के साथ हम एक हो गए हैं.
Gratitude. Gratitude. Gratitude for everything. Gratitude to all our masters. Gratitude to Brahmarishi Pitama Patriji, Mahavatar Babaji, Maharishi Bhrigu, सारे सप्तऋषि, सारे masters, astral masters, सारे ऋषि महर्षि, माता महालक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी. Gratitude, धन्यवाद, धन्यवाद for this meditation. Limitless thanks and gratitude for everything in our life. Those who want to continue in meditation, they can continue. Last 2 minutes. जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहें. आखिरी 2 मिनट.
1 minute. Forty seconds. Thirty seconds. 20 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब बहुत ही धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0. एक ग्लास पानी अगर आप पी सकते हैं, so that is advisable. मेडिटेशन के immediately बाद take a small glass of water if possible. जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो प्लीज बैठे रहें। एवरी वीक मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे नाइट को हमारा मेडिटेशन होता है। प्लीज जॉइन अस फॉर दिस एक्सपेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ योर सोल। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम मंडे अगेन with Pitama's book, Patriji's Messages. Very beautiful book, very deep. इसमें बहुत deep understanding है। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ for joining me today for this meditation. Thank you. See you all on Monday again. Thank you.